Where did we stop last time? We're in Pada Sevana. Is that correct? Or Maranam, remembering? Pada Sevanam, serving the lotus feet of the Lord, serving the devotees. Correct? Yes, So Prabhu. we're going to Archana. Yeah. Okay, so we have here, just to recap a little bit, okay, we get Shravanam, hearing, Kirtanam. Then we have Smaranam. When you hear chanting, you start remembering the Lord. And then when you're remembering, you go for the service of the lotus feet of the devotees, of the Lord and the devotees. Okay? Let me put this here. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tanamane Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunavadi Paskacha Desatarine. Today we had a very nice class by some beautiful sannyasi from Mayapur. They came in Kuala Lumpur. How to take that thing? And okay, I'm spotlight now, so I can take this out. Thank you so much. So there was many beautiful points in the class, and just want to report that the deities were very beautiful, and it was very nice moment to be in that association. Plus, we did the first day, I think, of the Julian Yatra. We, gave the Lord the swing, and we did the swing ceremony, offer lamps like that. I hope you all want to do the same in your respective temples. Okay, so like they say, I digress. So in the system, we have the increase of our devotional service. Now we are in Padasevana. So after hearing chanting, now what we're doing, we're serving. See, the desire to serve is there. Just like, in the material world, a boy meets a girl, he has a little bit of a fans attraction. It's called the puppy love. And then they decided, oh, I'm going to do some service. So I'm going to buy some flowers. I'm going to bring to her. I'm going to invite her for a nice vegetarian meal, invite her to the temple or something like that. See, the service start after the 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 first impression comes in. So Shravanam, Kirtanam, Pada Sevanam. We want to serve the Lord naturally because our love is increasing. Okay. Translator, thank you. Vishnu. We're going to have translation. Yes, Prabhuji, Anushka Mata. Anushka. Mata, are you there? She also went to the Mayavadi, just like me. Black hole of a cyber world. Hare Krishna. All devotees, thank you for coming. Hare Krishna. Yes, Anushka. हरे कृष्ण. ओके, सो जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम नवदा भक्ति के बारे में जान रहे हैं. आई एम बैक टू हैविंग अ फॉर्म. तो जैसे पिछली क्लास में हमने श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम के बारे में जाना. तो पाद सेवनम, तो
प्रभु जी ने इसका उदाहरण दिया। जैसे हमें अपने जो हमारी सेवा है, जो हम भक्ति करते हैं, हमारा कर्तव्य है कि ये सिस्टम इस तरीके से चलता है कि हम हमेशा अपनी भक्ति को और बढ़ाते हैं। तो जैसे प्रभु जी ने उदाहरण दिया कि जब हम सुनेंगे, फिर उनके बारे में बोलेंगे, उनका स्मरण होगा, तो हम कुछ उनकी सेवा करना चाहेंगे। तो पाद सेवना, भगवान के चरणों की सेवा। जिस प्रकार बहुत जगह में हम देखते हैं कि कोई मतलब जवान में ऐसा बहुत होता है कि कोई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो चाहेंगे उनके लिए कुछ करूँ, फूल लेके जाऊँ, मतलब आकर्षण होता है। प्रभु जी ने बोला उसे पपी लव बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं था ऐसे बोलना, मगर तो हम उनकी कुछ सेवा करें कैसे ना कैसे। तो वैसे हम भगवान की भी फिर सेवा करना चाहिए, उनके बारे में सुनेंगे, बोलेंगे, स्मरण करेंगे। हमारा कर्तव्य है उनका कुछ सेवा करना। Okay, so the principle of serving the Lord, of the lotus feet of the Lord, can manifest in many ways, right? We serve the deity, we service the temple, serving the Vaishnavas, serving the Lord's mission, and serving the devotees. Okay, serving the devotees is a very particular, how to say, position for us, because by serving the devotees and the devotees doing their service, so you're serving twice. You're serving the devotee and you're serving the service the devotee is doing. It's beautiful. You see, you're assisting in the movement of Lord Chaitanya. That is very pleasing to the Lord. Vaishnava Seva Paramasiddhi. So the service to the Vaishnava is the greatest perfection. Sometimes we feel like, why should I serve the Vaishnava? We have our private lives, you know. But once we open up in serving the Vaishnavas, our horizon of devotional service expand unlimitedly. Mushka? तो भगवान की जो सेवा है हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। बहुत तरह की सेवा अगर हम करेंगे तो ज़रूर नहीं हम फूल ही ले जाएं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम भगवान की चरणों की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं, उनकी घर की सेवा करते हैं, भगवान के मंदिर में हम सेवा करते हैं। और जो भगवान का ये मूवमेंट है, हम इसका प्रचार करके हम कैसे न कैसे सेवा करते हैं, हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। तो प्रभु जी बोला कि विशेषकर हमारे लिए ये बहुत अच्छा स्थान है हम भक्तों के लिए कि हम भक्तों की सेवा करें। हम कई बार सोचते हैं कि मतलब खुद का भी तो हमारा कोई जीवन है, हम अपना काम मतलब भगवान की हम डायरेक्ट सेवा कर लें, भक्तों तक क्यों जाना। लेकिन भक्तों की सेवा जब हम सुनते हैं वैष्णव सेवा परम सिद्धि, तो हम इससे क्या होगा, हम उन भक्तों की सेवा कर रहे हैं जो फिर भगवान की सेवा करेंगे। फिर डबल सेवा हो गई, हमने उनका सेवा करा तो हमारे उनके थ्रू फिर भगवान का सेवा, तो कहीं ना कहीं हम भी माध्यम बन गए एक तरीके से। तो इससे हमारा जो हॉराइजन है, एक तरीके से हमारा जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा विस्तारित हो जाता है। यस प्रभु। So the important transformation here is not what can I get from Krishna, but what can I do for Krishna and his devotees. तो इसमें विशेष बात जो है कि हम ये देख सकते हैं कि मुझे कृष्ण से क्या मिल सकता है, नहीं मैं कृष्ण के लिए क्या कर सकता हूँ, और ये कृष्ण के लिए और कृष्ण के भक्तों के लिए। और इससे पहले जैसे प्रभु ने कहा था कि हम भक्तों की सेवा करते हैं, तो इतने महाप्रभु के मूवमेंट में हमारा एक बहुत अहम योगदान होगा। So we hear now Smaranam, Kirtanam. What is that? What's the other one? Smaranam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Yes. Pada Sevanam. Then we come Archanam. Is the fifth Archanam. That's daily worship. Now, daily worship, I'm going to categorize daily worship like we have daily worship in the temple. And most of us, I don't think we worship the deity in the temple officially, like a ISKCON deity, but we have our little deity at home, a photo, a small deity, Ladu Gopal. I got my son, a Ladu Gopal. We still have it. We're still there in the altar, my son's house.
He's going to carry this to the whole life, Sadhu Gopal. So we start to come close to Krishna. We start serving the devotees. We come inside a close circle of serving the Lord directly, whatever we're at home or we're in the temple. We come close and serve the Krishna directly. We can bait the Lord, which is a beautiful, if you have a small deity, you get tamarind, right, with tilak, cotton, and you take that, you bait the deity with that, so to clean the breast and everything, the deity gets very shiny. It's a beautiful, pleasant, experience. We clean the photos, we clean the frames, dust everything. This is personal service to the Lord, you see, and we get close to the Lord. You see how more and more we're getting close to the Lord. Anushka. Well, let me finalize. I think she has some issues there. So this principle is given in the Bhagavad Gita. Patram pushpan phalam toyam yome bhaktya prayachati. Now, many times I meditate in the certain verses in the Bhagavad Gita. This verse particularly, it draw my attention because this is the supreme personality of God. He has such a power, such, what we are, Lakshmi Sahasra Sata Chintamani Prakarasadma Kalpa Vriksha. So they have Koti Sahasra Lakshmis worshiping him. And for him to have this incredible mercy to pay attention to our little selves. In the whole scheme of things, we're very small. But in the scheme of Krishna, the devotion is very big. It gets his attention. It doesn't matter what part of the universe we are. Doesn't matter what part of the day of Lord Brahma we are in this huge universe. The little light of devotion that sparks in any planet, anywhere in this universe, immediately gets the attention of the Lord. Why? But the Lord is in your heart. He immediately gets his attention. Otherwise, things are going mechanically, but once there is spark of devotion is there, it gets the attention of the Lord. And things start to change in a certain direction. You see? And that is a beautiful thing. So this Lord, all he asks, Patram pushpam phalam toyam. Give a leaf, a flower, a little bit of water. He didn't ask for amazing money, heavy taka, crores, no, gold, silver, stock options, in different companies. No, he didn't ask that. He didn't ask, that you become a slave to his devotion. No, he said that you genuine endeavor to offer him a very simple thing, a thing that anybody, anywhere can have it. You see, we can find a little bit of water, a flower, and a leaf anywhere. And he asked, you give this, but you give this with devotion. So this is the process of archana. You see, that by which you become very intimate with the Lord. Anushka, that was a mouthful, sorry. So, am I audible now? I'll just close my video. तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम के बाद हम पहुंच गए अपने 5वें स्टेप पर, जो कि है अर्चनम, भगवान के विग्रहों की सेवा करना।
और प्रभु जी ने बोला इसे हम अलग अलग स्तर पर जैसे विभाजित कर सकते हैं कि हम भगवान के मंदिर जाते हैं, वहाँ भगवान के विग्रह होते हैं, हम भगवान का फिर डायरेक्ट सेवा तो नहीं करते मगर उसको भी हम मंदिर में हम जब आरती देखते हैं तो सेवा में कंसिडर हो जाता है, या फिर हम घर में भगवान के चित्रपट रखते हैं या फिर भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं। काफ़ी फेमस लड्डू गोपाल रखते हैं सब। प्रभु जी ने बताया कि उनके भी सुपुत्र के पास लड्डू गोपाल हैं और वो उन्हें हमेशा अपने साथ रखेंगे। और भगवान ने हम पर इतना कृपा करा है कि अर्चनम के माध्यम से, भगवान के विग्रहों की सेवा के माध्यम से हम एक बहुत ही क्लोज सर्कल में आ जाते हैं। बोला प्रभु जी ने, भगवान के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ प्रभु जी ने बार बार बोली कि हम भगवान का डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, सीधे हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। यानी कि हम ये बात समझें कि विग्रह कृष्ण ही हैं, तो भगवान ने हमें अपना खुद का सेवा करने का ऑप्शन दिया हुआ है कि हम भगवान को स्नान करा सकते हैं, हम उनके लिए बहुत सुंदर सुगंधित जल तैयार कर सकते हैं, हम वस्त्र ला सकते हैं, हम उनको तिलक वगैरह कर सकते हैं। हम जब भगवान के स्नान करा के फिर उनको पोंछते हैं तो बहुत सुंदर भगवान का विग्रह, जैसे जो ब्रास धातु का होता है, वो बहुत चमकने लगता है, तो देखकर भक्तों को बहुत आनंद आता है। और ऐसे चित्रपट धूल साफ करना या भगवान को भोग लगाना, तो हम भगवान से हमारा सीधा आदान प्रदान हो रहा है। और फिर इसमें प्रभु जी ने एक बात आगे और बोली कि भगवद गीता में प्रभु जी ने कहा कि ऐसे प्रभु जी कई बार इसमें ध्यान लगाते हैं, तो एक श्लोक उन्हें खासकर बहुत अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, जिसमें भगवान बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रचते, कि मुझे केवल पत्र, पुष्प, फल या जल ये आप प्रदान कीजिए। मतलब वो जो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो सभी के मतलब सहस्त्र लक्ष्मियों के पति हैं, वो हम जैसे जीवों के इतनी छोटी सी भक्ति जो हमारा प्रयास है, एंडेवर है, उसे स्वीकार कर रहे हैं। जबकि मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम किस ब्रह्मांड में, हम ब्रह्मा के कौन से दिन में, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और कृष्णा ये भी नहीं कह रहे कि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो ये नहीं कह रहे कि मुझे खूब धन ला के दो, ये ला के दो, कुछ मेरे लिए इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट, ये वो नहीं। वो उन्होंने खुद भगवद गीता में हर एक व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं पत्ता, फल, जल और पुष्प, ये कहाँ नहीं मिलेगा, कहीं भी झाड़ी वाड़ी से पत्ता वत्ता ले आओ, तो भगवान बोल रहे हैं मुझे बस ये चाहिए। तो बहुत, लेकिन हमारा वास्तविक जो प्रेम है, प्रयास होना चाहिए बस। उससे अगर हम इतना सा भगवान को ऑफर करते हैं तो कृष्णा उससे बहुत खुश हो जाते हैं। इतना हम पर भगवान ने इतना कृपा करी हुई है। यस प्रभु जी। So, in our ascension process, right? So here we become personal with the Lord. We offer some service, vandanam, we artik, all these beautiful things. So the next process is from the heart. Immediately comes this natural desire to offer prayers to the Lord, to glorify the Lord. You see, just like, a young man meets a young woman and he's saying good things about her. So she become very pleased. Of course, this is a very material thing, but you see the process, you follow the same proportion. You see, it's the same. We are in love dancing with Krishna. So now we have this personal closeness with him, naturally from our heart, a desire to offer prayers to the Lord, to offer glorification. And I appreciate that I'm not very good in having prayers from my heart, but I can see from the Bhagavatam and from different literatures we have how beautiful prayers the devotee have. For example, we have Kunti Devi, Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj. And these are not just prayers, they come with seeds of great enlightenment for the devotees. You see, from these prayers, we can learn a lot about of a philosophical standing, our ethics in devotional service, and those
those particulars. There's some news coming in. Okay, so one of the famous prayers is by Lord Chaitanya, right? Lord Chaitanya, he came to taste the mood of a devotee. Ayu Nanda Tanuja Kinkaram Patitamam Vishame Bhavan Buddho Kripaya Tava Pada Pankaja Stita Duli Drisham Vishintaya. O son of Maharaj Nanda, I am your eternal servant. Yet somehow I have fallen into this terrible ocean of material existence. Isn't that our situation here? We can perfectly, this could be our prayer to Lord Krishna. We just, plagiarize from Lord Chaitanya, which is okay. We can do that. That's why you have this prayer there. Huh? Please, by your mercy, consider me a particle of dust at your lotus feet. This is Shikshastaka 5. So this is the servant mentality. We humble ourselves before the Lord. Now, we come to this process. 7 is Dasha. Prabhuji, Becoming, translation. yes. And there's also the translation. Okay. Anushka? यस प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बोला कि ये जो पूरा है नवधा भक्ति जो हम जान रहे हैं, तो धीरे धीरे हम भगवान से और पर्सनल होते हैं, हम और ज़्यादा उनके नज़दीक जाते जा रहे हैं। अब हमने उनके बारे में सुना, फिर उनके बारे में हमने अब आती है बारी छठे की वंदना। अब हम वंदना करेंगे यानी प्रार्थना करेंगे। अब जो है वो नेचुरली वास्तविक रूप से हमारे दिल से, हृदय से अब इच्छा प्रकट होती है कि और मैं गुणगान करूं। तो इसमें जैसे हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं, हालांकि ये बहुत भौतिक उदाहरण हो गया, मगर थोड़ा हमारे मतलब बुद्धि को समझाने के हम समझ सकते हैं। जैसे जो यंग मैन होते हैं, कोई जवान लड़का है, उसे कोई लड़की पसंद आई, अब उसे पसंद आई, उसने सब प्रक्रिया से गुजर के वो गया, तब वो फाइनली वो दिल से बोलेगा कितनी सुंदर है, कितना अच्छा गाती है, कितना अच्छा बोलती। तो अब उसके दिल से आई, तो हम भी भगवान अब हृदय से करना प्रारंभ करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, हम भगवान से और पर्सनल होते जा रहे हैं, क्लोज होते जा रहे हैं। तो भक्त इतने प्रेम से, इतनी सुंदर तरीके से अब भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय की गुहार भगवान के आगे प्रकट करते हैं। जैसे हम कुंती देवी का देखते हैं, कितने प्रेम से और कितने सुंदर तरीके से, या ध्रुव महाराज, जैसे बहुत सारे भक्तों का उदाहरण है। तो ऐसे हमारे लिए खासकर प्रभु जी ने बोला, जैसे एक बहुत फेमस प्रार्थना है जो कि है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, जो शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्वमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित तूली सदृशम विचिंत्य, कि हे नंद तनुज जो आप हैं कृष्णा, कि मैं आपका नित्य किंकर दास हूँ, लेकिन किसी कारण से मैं जन्म मृत्यु के सागर में पड़ गया हूँ। तो आप मुझे इस अब सागर से निकाल के मेरा उद्धार करें और अपने चरण कमलों का मुझे कण बना लीजिए, धूल बना लीजिए। तो हम ये सर्वेंट मेंटालिटी प्रभु जी ने बोला सीख सकते हैं। सेवक का जो मानसिकता, मनोदशा है, उसको हम सीखें कि बहुत विनम्रता और प्रेम से हमने कैसे भगवान की सेवा करनी है। यस प्रभु जी। Anushka, you have a chip on your brain. Thank you. Microchip, huh? So, okay. So, I was rushing because I want to come to this point, which Maharaj gave in the class this morning. You see? So he was saying that we follow 4 regulative principles, right? We have no intoxication, no eating of flesh, no sex outside the marriage, no gambling. This Did you all know that? Krishna, he has one principle. We have 4. And the principle is he'll do everything for his devotee. You protect the devotee. You make the devotee, you serve the devotee
the devotee who's pure in the heart. He wants to serve that devotee. The devotee wants to serve Krishna, wants to serve the devotee. That's the thing between the devotee and Krishna, and it's very dynamic and it's very sweet. Once you get to that particular situation, you don't want to change that for anything. There's no amount of money, prestige, or adoration can take away the position of being the intimate servant of the Lord. Anushka. Yes, प्रभु। इससे पहले नेहा माता जी ने बीच में ट्रांसलेशन के लिए रोका था, तो प्रभु जी ने कहा कि प्रभु जी इसलिए आगे जल्दी बढ़ रहे थे क्योंकि उनको ये पॉइंट लाना था जो आज महाराज की क्लास में प्रभु जी ने बोला, उन्होंने सुना तो कि हमारे लिए जैसे 4 नियम का हमें पालन करने के लिए बोला जाता है कि मतलब मास पान ना करें, मतलब हम के अनुयायी हैं, महाप्रभु जो वो करते हैं, भगवान ने जो बोला है वो, तो लेकिन हमारे लिए 4 नियम है, तो भगवान है, भगवान नियम है, उनके लिए 1 नियम है। उनके लिए क्या नियम है? वो इस नियम का पालन करते हैं कि वो अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं, और फिर हम भी यही करें जो भगवान चाहते हैं। भक्त चाहते हैं कि मैं भगवान की सेवा करूँ, भगवान चाहते हैं मैं भक्त की सेवा करूँ, तो ये मैं तुम मैं तुम मैं, एक तरीके से डांस चल रहा है आपस में दोनों का, तो बहुत गतिशील, बहुत मतलब मधुर ये संबंध है। तो भगवान चाहते हैं कि हमारी सेवा करें, लेकिन भक्त चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा। So we go into this process. We start hearing, then chanting. Then we start remembering the Lord. And that's a lot of things to remember. So many pastimes. That's beautiful. Just I will share with you a pastime of Krishna, a little bit of the topic in here. But I hear this morning. See, Shravanam, Kirtanam. I heard, now it's talking. So this is Krishna is a little bit of a rascal boy, So he is going around and he is stealing butter. And, and with the monkeys, he's going in the house of the gopis. He's going everywhere. He's stealing butter. He's doing nasty things, in there, breaking things sometimes. And the gopis, they complain, Mother Yasoda. But there's no evidence. What is the evidence? Right? It's like a crime scene, but who did what? We don't know. It could be the monkeys. It could be something else. How you're gonna. So one particular gopi, I think the name was Karuni or something. She was very keen in get Krishna in the flagrant, red-handed, and she positioned herself, and finally she caught him. Ha! I caught you. This is red-handed. This is it. He took him to Mother Yasoda. And she went there. She put the room. She called Mother Yasoda. He said, I caught your son breaking things, stealing butter, in my house. And you asked for the proof. Here is the proof. And out came her own son, not Krishna, the son of the Mataji who is complaining. And she looked, and Mother Yasoda said, well, so what is this? What is Krishna? Why your son is here? And she was extremely embarrassed. And she goes, wah, wah, wah. Okay. Excuse me. And she got her son. She was going back to her house. So when she was going back to her house in the middle of the way, Krishna, he become Krishna again. And he looked at her and said, you see, I told you, you do not go complain to my mother. And you did that. So I'm upset with you. And you be careful. If you do this again, next time I'll become your husband. Oh my God. Oh, isn't that sweet? This is Shravanam Kirtanam.
Smaranam. You see, this is amazing pastimes, What a naughty personality, is. So anyway, we're serious now. Okay, so you hearing all this, we become enthused in the heart to offer prayers, to offer vandana, to offer service, to offer worship, and then we offer prayers. Okay, then we become the servant. We become the servants of the Lord. We accept oneself as a servant of the Lord, like Hanuman. He was the great Dāsa bhakti. His identity is I belong to Rama, I exist to serve Ram. Anushka, sorry, I got a little carry on. Just past tense. तो अब प्रभु जी ने बोला कि हम श्रवण करते हैं, उसके बाद हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर हम स्मरण करते हैं भगवान को, फिर हम भगवान की सेवा करते हैं, फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और मतलब इसके बीच में प्रभु जी ने फिर बोला कि श्रवणम कीर्तनम बोलते हैं, फिर स्मरणम। तो प्रभु जी ने कहा स्मरण करने के लिए भी बहुत कुछ है, भगवान के बहुत सारे पास टाइम्स है। तो इसमें प्रभु जी का एक पास टाइम ऐसे याद आया, भगवान की एक लीला जो प्रभु जी ने शेयर करा कि भगवान जो है, कृष्णा जो है बहुत बदमाश है, तो बहुत चोर है एक नंबर का। तो बहुत चोरी वगैरह करते थे ऐसे वृंदावन में, जब तो बंदरों के साथ जाते थे, बहुत नटखट मतलब हरकतें करते थे, तोड़ फोड़ मचा रखी थी बिल्कुल, गोपियों के घर में माखन चोरी ये वो। अब इतना कुछ था, उनको बहुत अच्छा लगता। लेकिन अब कोई अगर इसको रिपोर्ट करना चाहे कि अब है तो चोर ही ना, कि तो चोर के लिए तो शिकायत करनी पड़ेगी, कंप्लेन करना पड़ेगा। मगर उसके लिए अब ऐसे ही थोड़ी कंप्लेन होगा, कोई गवाह भी तो चाहिए ना, कुछ सबूत प्रमाण है ही नहीं। लेकिन एक गोपी थी, उसका नाम प्रभु ने का शायद से करुणी, बहुत खुजली थी उसको कि नहीं मैं तो इसको साबित करके रहूँगी कि कृष्णा चोर है और कैसे चोरी करी। तो एक बार उसने सोचा था, ठाना था कि बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ूंगी और पूरे सबूत के साथ पेश करूंगी। तो मैया यशोदा के पास एक बार कृष्णा ऐसे ही चोरी कर रहा था, ये मौका मिला करुणी को, उसने पकड़ा और ले गई हाथ पकड़ के कृष्णा को यशोदा मैया के पास। बाहर से दरवाज़ा पीटा, खोलो खोलो देखो आज कौन लाई हूँ। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा ये देखो कौन है, चोरी कर रहा था मेरे घर पे माखन का। तो यशोदा मैया ने कहा देख तो लो किसको लाई हो। तो देखा वो कृष्णा का हाथ पकड़ के लाई थी। तो वो जो गोपी था, वो जो माता जी पकड़ के लाई थी, उसी का बच्चा निकला। तो उसके बाद वो बिल्कुल शौक हो गई, ये क्या हुआ? तो यशोदा मैया ने कहा कि कोई बात नहीं, होता है, ऐसे मेरे बेटे के खिलाफ ऐसे कुछ भी हवा में बोलने मत आ जाओ। वो बाहर गई तो बाहर जाते जाते देखा वापस से वो बच्चा कृष्णा निकला। तो वो तो बिल्कुल हक्का बक्का हो गई थी। तो उसके बाद कृष्णा ने कहा कि बहुत चालाकी मेरे आगे नहीं चलेगी अगर अगली बार ऐसे करा तो अपने पुत्र की जगह अपने पति का हाथ पाओगी। तो हमने मतलब कृष्णा, लिटिल कृष्णा में भी ऐसे पास टाइम देखा है। तो मतलब उन्होंने पकड़ा, भगवान जो है ऐसे बहुत लीलाएं करे हैं। तो इससे प्रभु जी ने बोला कि फिर हम स्मरण करते हैं, स्मरण करने के लिए बहुत है भगवान की लीलाओं के माध्यम से। फिर से उसके बाद हमने सुना, श्रवण करा, भगवान की सेवा करी, भगवान से प्रार्थना करा। अब फिर हम भगवान के प्रति दास का भाव ले आते हैं। अब हम भगवान के से सेवा करना चाहेंगे, सेवक होंगे। तो दास्यम अगला स्टेप है, अगला प्रोसेस है जो प्रक्रिया में दास्यम है। जैसे हनुमान भगवान के दास थे, अपने हृदय से पूरी तरीके से शरणागत थे, और वो कहते थे कि मैं श्री राम को बिलोंग करता हूँ, कि मैं राम की ही संपत्ति, राम के लिए ही जो भी करूँगा और मैं राम के लिए ही हूँ। राम So we have now eight Sakyam. Sakyam Atmanivedanam. So Sakyam become the Lord's friends. Now, can any of you imagine to become a friend of such a personality? Because see, generally, even in the material world, you become friend of a celebrity, a powerful billionaire or whatever. There's always a desire to take something from the celebrity, from the billionaire, from the people that are in super high position than we are. And the Lord knows that. The Lord knows that, you see. So therefore, the Lord doesn't give himself very easy unless devotees have pure heart. Then the Lord can give himself to the devotee. The thing is, the Lord doesn't give himself very much. It's kind of hard because once he gives, he becomes attached to that devotee.
controlled by that devotee. You see, so therefore, it's a very high position to have that kind of friendship. But we should strive to be friend of Krishna with respectful distance and develop that friendship. We have Arjuna, right? And what Krishna said to Arjuna in the middle of the battlefield, Bhakto Sime Sakta Seti, you are my devoted friend. And because you are my devoted friend, I'm telling you this. You see, he didn't tell Arjuna, you're such a pundit. You are a powerful yogi. You are a master of Shastra. I'm giving you this knowledge. No, Krishna, you're my friend, and I'm giving you this knowledge. You see, what a position. What an incredible understanding. Huh? So we are striving to become friends, to have friendship with the Supreme Lord. This is our process. There's no other process in the world that bring us to that position. None. No, God is far away. We're here, trembling fear because the Lord can smash us. You see him talk about other, religious process. Out of fear, we're serving the Lord. But here, out of love and pure relationship, we're serving the Lord. This is the right way of serving the Lord. तो जब हम भगवान के बारे में हम बार बार इस प्रक्रिया से होकर गुजर रहे हैं कि श्रवण कीर्तन भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हम उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं, उसके बाद हम भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम भगवान का अपने आप को सेवक रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और फिर हम फाइनली जब आगे चल के हम प्रयास करते हैं, जैसे प्रभु ने स्ट्राइविंग शब्द यूज़ करा, हम प्रयास करें कि हम भगवान का साख्यम, अगला प्रक्रिया है साख्यम, हम भगवान के सखा रूप में हम भगवान का मित्र बने, दोस्त बने। तो भगवान का दोस्त, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनका मतलब इन जनरल भौतिक जगत में भी अगर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, अरबपति खरबपति, उस दोस्त बनेंगे पहले तो मतलब आसान नहीं होता है, और अगर बनेंगे तो हम चाहेंगे कि मतलब कुछ तो हमारा प्रॉफिट हो कि भाई उसका दोस्त बन गया तब तो लाइफ सेट, तो हम चाहते हैं कि उसके बदले हमें भी कुछ मिले। लेकिन तो भगवान इसलिए अपने आप को इतने आसानी से उपलब्ध नहीं कराते हैं सबको, कि अगर भगवान का दोस्त बन गया वो तो परम पुरुषोत्तम है। अब दोस्ती मतलब फिर कुछ ना कुछ भगवान अपने भक्त से वैसे ही उनकी सेवा करना चाहते हैं, फिर आसक्त हो जाएंगे और अपने भक्त के द्वारा नियंत्रित होने लग जाएंगे। तो भगवान उस व्यक्ति को अपने आप को उपलब्ध कराते हैं, उस व्यक्ति को अपने आप को देखते हैं जो बहुत शुद्ध होता है हृदय में। Hello, Lucilla, close your phone, please. Thank you. Anushka, please continue. Lucilla, close your phone. How you do that? You put me at... Okay. Go. You have to forgive. We are old people. But we're here. Okay, Anushka, sorry, Yes, I please. interrupt you. Please finish. यस, तो भगवान आसक्त हो जाएंगे अपने भक्त से, तो शुद्ध और जो सरल हृदय में होता है भगवान उसे अपने आप को प्रदान करते हैं। बहुत ऊंचा पद है कि हम भगवान का दोस्त बने। जैसे भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, हम भगवत गीता समझने का प्रयास करें, तो अर्जुन को भगवान ने ज्ञान क्यों दिया है, क्या बोल रहे हैं कि भक्तों सी में सखा चेती, कि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ज्ञान प्रदान करा। तो उस स्तर पर हमने पहुंचना है, लेकिन बहुत सामान्य दूरी बनाए रखनी, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस एक कीवर्ड है, बार बार इसको इस्तेमाल करते हैं कि इस सम्मान के साथ, जैसे अर्जुन ने भगवान का सम्मान करा था, तो इतना सहज हमने नहीं लेना है कि हम तो भगवान के दोस्त हैं, तो मतलब थोड़ा बुद्धि का भी प्रयोग करके सम्मान से दूरी बना करके और बहुत प्रेम हमने भगवान के प्रति अपने हृदय में उजागर करना है। तो बहुत प्रेम का स्तर है भगवान का सखा के रूप में। So here there is an astonishing way of relating Supreme Lord, you see, and he goes beyond the all reverence. Now it's friendship. Sometimes I go
and I'm listening to some scholars in Jewish religion and Christians, and particularly the Jewish people. I respect them very much. They're doing their austerity, they're doing the tapasya, they are studying their scriptures, and they are giving the education of God, and is such, God is such a faraway personality that, what happened if they would see that the Lord, he has friends in this place called Vrindavan, and the friends, they clean on his shoulders, they play with him, they wrestle with him, they joke with him, they heads, I think, would explode. So therefore, they are in the little platform. It's good for them. Maybe after some time, whatever, some reason, the Lord will touch the heart and they'll come to understanding, how the Lord can be a friend with his devotees. But you see how confidential we have in this, our transcendental process of Krishna consciousness, to see the Lord act with his devotees. So this is Dasya. Dasya, wait. Sakya. Okay, Sakya. And we get ready for the last one. तो ये एक बहुत अद्भुत प्रक्रिया, बहुत एस्टॉनिशिंग है। मतलब कुछ जूइश धर्म है, उसके जो विद्वान पंडित वगैरह स्कॉलर्स हैं, तो प्रभु जी ने बोला, मतलब बहुत सामान्य उनका स्तर है, मतलब बहुत तपस्वी, बहुत वो लोग भी तपस्या करते हैं, शास्त्र का, अपने स्क्रिप्ट जो भी उनके स्क्रिप्चर्स होते हैं उनका अध्ययन वगैरह करते हैं, उससे भगवान के बारे में बताते हैं, चर्च मीटिंग ये सब होता है, ज्ञान देते हैं भगवान के बारे में। ठीक है, अच्छा है, मगर वो जो इतना कुछ कर रहे हैं, क्या उनको पता है कि भगवान कैसे वृंदावन में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, गाए जा रहे हैं और अपने भक्तों को पूर्ण तरीके से अपने आप को दे रहे हैं? तो हमें मालूम है, और हम उस प्रक्रिया पर, हम उस स्तर पर पहुंचने का प्रयास तक कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा है कि हमें इतना गुह्य, इतना रहस्यमय भगवान के हैं, और उन्होंने हमें अवसर दिया है कि हम इस पथ पर चल सकें। तो ये हो गया साख्यम का विधि। और अब फाइनली जो नवदा भक्ति का नवा प्रक्रिया है, उस पर Okay. We have somebody talking in the background somewhere, but okay, so now we come to the crux of the matter, which is Atma Nivedanam. This is complete surrender. So you see, from hearing, we surrender. But that's always constant. You see, hearing, hold on. Hearing, we are doing kirtanam, we're hearing. We are doing smaranam, we're still hearing. We're doing padasevana, we're still hearing. We never stop hearing. We're doing archanam, we're still hearing. We're doing vanda, doing dasyam, we're still hearing. We're doing sakyam, we're still hearing. Atma Nivedanam, we're still hearing. The hearing never stops, which is a beautiful thing. Hearing is the beginning, and the end is the alpha and omega. I just put in this there. Yes, Anushka, that's it. तो अब हम हैं आत्मनिवेदनम पर, अपने आप को, आत्म को, स्वयं को पूर्ण रूप से शरणागत कर देना, जिसमें बोल रहे हैं कंप्लीट सरेंडर, मतलब पूर्ण शरणागति, कि हम सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं। अब भगवान के हम दास भी हैं, भगवान के मित्र भी हैं, भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन भी रहे हैं, उनकी सेवा भी कर रहे हैं, उनको याद भी कर रहे हैं, उनका कीर्तन भी कर रहे हैं। तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु, ये जो भी प्रक्रिया है, से हम आखिर में फाइनली पहुंच गए कि हम पूर्ण रूप से सब कुछ कृष्ण के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये श्रवणम से शुरू होकर
पूर्ण शरणागति तक पहुंच गया। और इस पूरे 9 जो प्रोसेस है इसमें एक चीज़ लेकिन कॉमन है, निरंतर चलता आ रहा है। श्रवणम में हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तनम में हम श्रवण कर रहे हैं, स्मरणम में हम श्रवण कर रहे हैं, पाद सेवनम में हम श्रवण कर रहे हैं, वंदनम में श्रवण कर रहे हैं, अर्चनम में श्रवण कर रहे हैं, दास्यम में साख्यम में श्रवण कर रहे हैं, और आत्मनिवेदन में श्रवण कर रहे हैं। तो श्रवणम से ही शुरू, श्रवणम पर ही खत्म। श्रवणम ही अल्फा है, श्रवणम ही ओमेगा है। तो आत्मनिवेदनम, लेकिन श्रवण निरंतर है। यस प्रभु। Okay, just for a little understanding, Alpha and Omega in Greek means the beginning and the end. So it's Alpha, A, Omega is the last letter of the Greek. So that's the beginning and the end. So in the beginning, you're hearing, and the end, you're still hearing. You see, this is something that never stops. Even amongst Satatam Kirtayanman, in the Bhagavad Gita, Krishna said, the great souls, they're hearing about my glories. This hearing never stops. Anushka? यस प्रभु। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा साइंस स्टूडेंट्स को मालूम ही होगा अल्फा ओमेगा और, पर अल्फा ग्रीक लैंग्वेज में प्रभु जी ने बोला कि अल्फा होता है ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का, अक्षरों का, और ओमेगा पे ख़त्म होता है। तो शुरुआत भी श्रवण, ख़त्म भी श्रवण, और श्रवण बहुत आवश्यक है। जैसे कृष्णा भी भगवद गीता में बोल रहे हैं, खत्म करते हैं तुम। मेरे जो मतलब बहुत नज़दीकी मेरे जो भक्त हैं वो क्या कर रहे हैं मेरा श्रवण कर रहे हैं नित्य सतत। So, Atmanivedana means to surrender everything to the Lord, or to give the most important thing. That's one of the, path of devotional service, to give the most important thing to the Lord. So, there is a devotee that he accomplished that, Atmanivedana. Who is that devotee? It's said that Bali Maharaj, you see, he gave 3 steps to Vamanadev. Vamanadev, one step took the earth, the second step took the universe. Then he turns to Bali and says, hey, you gave me 3 steps. Where am I going to put my 3rd step? It's amazing, the Lord's pastime. It's so lovely. So Bali Maharaj also, he was very smart. He could have said, I don't know, why don't you keep? He was very smart. Immediately, he responded by saying, well, you can put in my head, with this very intelligent answer. He was a very intelligent devotee. Yes, he stepped over the tree. He took land, but now you take my very self. You see, that's amazing. He's smart, very witty. You see, it's a devotee, amazing devotee. And he point surrender everything to the Lord. Okay, so we get to a point in our life that you say to the Lord, you put your step in my hand, I surrender everything. We always come to that point sometime. तो प्रभु जी ने बोला कि आत्मनिवेदन यानी कि सब कुछ कृष्ण को दे देना, सब भगवान को सौंप देना, अपने पूरे स्वयं मतलब अपने आप को ही भगवान को दे देना, अपने लिए जो सबसे बहुमूल्य वस्तु है उसे भगवान को दे देना। जैसे ये इसमें हम उदाहरण देखते कि आत्मनिवेदन का एग्जाम्पल कौन है? बस जिन्होंने अब भगवान आए वामन देव के रूप में, उन्होंने एक पद यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा, अब उनके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, अब क्या? लेकिन वो उसमें परिस्थिति में वो घूम नहीं गए, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, बहुत चतुर हैं, बहुत समझदार, होशियार, बुद्धिमान। तो उन्होंने एकदम उन्होंने उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा आप मुझ स्वयं को ही ले लीजिए, आप तीसरा जो पग है आप मेरे ऊपर रख दीजिए। और उन्होंने ऐसे पूर्ण रूप से अपने आप को शरणागत कर दिया। जैसे हम सब कभी ना कभी फिर आखिर में हार ही जाते हैं, और फिर ये मौका आ ही जाता है कि हम बोलेंगे कि पूर्ण रूप से भगवान मैं अब सरेंडर कर रहा हूँ, मैं नहीं खुद कुछ कर सकता, मैं आपको पूर्ण रूप। Okay, can I go? All right. So this principle Krishna expressed in the Bhagavad Gita. Sarva dharma parichaja manekam saranam vraja. Right? Abandon all varieties of dharmas, religion, process, intellectual speculation.
abandon everything, you surrender to me, be my friend. I'll give you shelter. Do not fear. You see, because surrendering to the Lord is like stepping into the void. And we fear. We want to see where we're going to go. How is this going to happen? Krishna said, do not fear. And that is a very step for the devotee. Do not fear. The Lord is there. You be perseverant in your devotion. Okay? तो भगवान खुद भगवद गीता में बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करके, सभी जो तुम्हारे मतलब बहुत सारी बौद्धिक परिकल्पनाएं, वैचारिक तर्क विकल्प, ये जो भी है तर्क वितर्क आदि इत्यादि, सबका त्याग करके केवल एक मेरी शरण में आओ, शरण पूर्ण रूप से मुझे शरणागत हो जाओ, सब कुछ मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, ना सोचा। तो जब ये मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा स्टेप है कि हम पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान को सौंप दें, तो एक तरीके से हम खुद बहुत कंफ्यूजन स्टेट में पहुंच जाते हैं, मतलब बहुत वॉइड में, शून्य में, खालीपन में हम जैसा चले जा रहे हैं, तो हमें मालूम नहीं आगे क्या होगा। लेकिन यही इस तरीके से ये प्रक्रिया है कि हम पूर्ण रूप से सौंप दें और भगवान पे शरणागत हो जाएं और उन पे ही बिल्कुल हम मतलब एक तरीके से उन्हीं को सब कुछ सौंप के शरणागत हो जाएं। यस प्रभु। Okay, so finalizing, I just want to make sure you all understand this. We went through 9 steps of devotional service, and I presented like a successive steps in the final surrender to the Supreme Lord. But each self-containing for fully surrender to the Lord. If you just hear, if you just remember, if you just serve the Lord, if you just become his friend, each one is enough to bring you to Atmanivedana. It doesn't have to be like step by step. It could be like one step and to the 8. It doesn't have an order, but order also can be nice. 1 to 8, you see? But each one can be enough to liberate one from the clutch of this material world. तो प्रभु जी ने कहा कि इस सब को फाइनलाइज करते हुए हम ये बात समझे कि हम जो इतना चलते हुए आए हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो अंत में हम ये समझ जाएं, जो हमारा कंक्लूजन है कि ये हर एक विधि जो है ये अपने आप में खुद में पूर्ण है और इसे आगे या पीछे किसी की आवश्यकता नहीं। ये एक एक विधि हमें खुद में आत्मनिवेदन, अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण को शरणागत करने में सहायता करेगी। जैसे हम केवल श्रवण करें, कीर्तन करें, तो एक एक आपस भगवान का स्मरण करना, भगवान से पूर्ण रूप से प्रार्थना का भाव लाना, दास्यम साख्यम सब पूर्ण है आपस अपने आप में। और इसका कोई ऐसे क्रम नहीं है कि हम ऐसे श्रवण करें फिर कीर्तन करें, क्रम में चलें तो ठीक है, मगर एक कोई अगर हम विधि देखें तो वो भी खुद में मोर देन सफिशिएंट है। यस प्रभु जी। Okay, I take 1 or 2 questions. I'm the yellow card right now, and very soon we will be a red card. So please, let's have 1 or 2 questions, and we can finish this taratari. Tell me. Yes, Hare Krishna, Prabhuji. I have one Yes. question, and also, Yeah. firstly, thank you for giving me this opportunity to translate. Thank you, Nehamati. Thank you, Prabhuji. And sorry, I apologize for any mistakes. I rush a lot, and you said I have a chip in my mind. No, I have a pen and a notebook in my hand. That also, I skip many points, many important points. So I'm really sorry for that. Thank you for tolerating enough. My question, Prabhuji, was that every process has Shravanam included in them. So what does Shravanam means here? Like thing we include in our sadhana to hear about Krishna's pastimes daily or some philosophy. Is that what Shravanam means? Shravana means hearing. So yes, hearing can have many things. Like if you're reading a book, that's hearing, right? In your mind, you hear, the philosophical discourse. If you're in the kirtan, you're hearing
right? If you are in a class like now, you're hearing. If you are discussing Krishna Katha with some friends, you're hearing your Gurudev, you're hearing, right? So Shravana basically is hearing, because it said that the transcendental sound vibration, they come to us by the ear, sound vibration. You see, like even in the Bible, it says at the beginning there was sound. You see, there was sound. Okay, so this sound also, it said in the Vedas, there was the sound, it's the Om. And from the Om comes the Gayatri mantra. You see, and from there, the sound, it becomes the Vedas. You see, so everything starts from the transcendental vibration. And by hearing that, we become, no, it comes to the heart. The sound vibration comes to the heart and change our heart. Okay? So that is the process. We always hearing. Means in a practical way, whatever words are entering our ears, that is what hearing is considered. Say again, Martha. Anything which is entering our ears in the form of words, that is to be considered hearing. Yes, but also if you're reading, that's also hearing. You see, because the words forming in your mind, in a sense, you're hearing in your mind what the philosophy is. You see, when you're reading, you're also hearing. Do you understand? Okay, so we are hearing what Prabhupada writes. Exactly. You see, so when Prabhupada's writing and you reading, you like hearing, right? It's the same. Okay, Prabhupada. You okay? Yes, thank you very much, Raji. Hare Krishna. Any other question before the red card comes in? Antara, how is your arm? Are you better now? Hare Krishna, Prabhuji, please accept my humble. It's better, but still I have pain sometimes. Yes. You taking medicine? Yes, Prabhuji. Anti-inflammatory like that? Huh? Yes, Prabhuji. I'm taking medicine and care it properly. Still, it have some pain. Okay. We still want to hear kirtans, starting our classes and readings, okay? At least you can do the left hand, right? Or you can just chant. Okay. So anybody has a question? Oh boy, look at that. So thank you very much. This was a beautiful